Assalamu alaikum, dear students. This is our first lecture of the uh, our certificate. So, जो हम अभी हेल्थ प्रोफेशंस एजुकेशन में है उसमें इससे पहले हमने आपके सामने कोर्स जो हमारा था कुरिकुलम का कोर्स आउटलाइन और हमने डिस्कस की थी और उसमें पहले मॉड्यूल जो हमारा था विच वाज द बेसिक्स ऑफ द टीचिंग with different domains, with the psychomotor domain, with the affective domain as well as the cognitive domain. तो सबसे पहले हम जो है उसमें टेक्सोनॉमी पे ऊपर बात करेंगे कि जो हमारे डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके टेक्सोनॉमी जो है 3 डोमेन्स के बेसिक पर रिगार्डिंग द cognitive domain, regarding the psychomotor domain and regarding the affective domain, कौन कौन से लेवल्स हैं और उस लेवल को हम किस तरह जो है अपनी एजुकेशन में अपने स्टूडेंट्स के लिए अपने अपने लेसन में जो है हम जो है यूज कर सकते हैं. राइट. सो जो मेरी कुछ इंट्रोडक्शन तो पहले हो चुकी थी. सो आते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक इंट्रोडक्शन. आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द ब्लूम टेक्सोनॉमी. Bloom taxonomy actually we can say that this is a classification और किस चीज की क्लासिफिकेशन है. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट आउटकम्स एंड स्किल्स. और ये जो है टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं कि उनके लिए डिफरेंट जो लेवल्स ऑफ लर्निंग है ये उसी के मुताबिक जो है वो बना देते हैं. ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात कर ले तो ये Bloom taxonomy that was for the first time proposed by an American education psychologist, that was the Benjamin Samuel Bloom in 1956. At that time, that Benjamin Bloom, he was the education psychologist at the University of Chicago. और उसने जो इनिशियली काम किया था that was just on the cognitive domain. बाद में 1972 में साइकोमोटर डोमेन और उसके बाद जो एफेक्टिव डोमेन पर भी मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट जो है उस पर काम किया था. लेकिन जो पहली दफ़ा इस आउटकम्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में कंसेप्ट देने वाला बंदा जो था दिस ऑल क्रेडिट गोज़ टू दैट बेंजामिन सैमुअल ब्लूम. और उसमें फिर अर्ली 2001 में फिर उसमें मॉडिफिकेशन भी हो गई, यानी उसमें मॉडिफाइड ब्लूम टेक्सोनॉमी हम इसको कह सकते हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे. तो ब्लूम टेक्सोनॉमी इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग है और जो आगे हम एग्जांपल के साथ बात करेंगे कि ये डिफरेंट लेवल कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वी शुड ऑल नो अबाउट व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. बिकॉज लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ये इसी की बेस पर जो है हम सारे जो है जितने लेसन है हमारे कुरिकुलम जो है और लर्निंग आउटकम्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर ही बेस होते हैं. So it is the beginning with the end in the mind. It means when you are teaching your student, so what you are expecting that at the end of this lesson, the student will be able to describe, to define, to enumerate, to enlist, to name, to explain, to differentiate. तो ये जो एंड इन द माइंड का मतलब ये है कि जो लेसन आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं एंड में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जो एंड एक्सपेक्टेशन एक्चुअली दैट इज एक्चुअली नोन एज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव. और हमेशा से जो है आप जब भी लेसन बनाते हैं, जब भी आप लेक्चर्स देते हैं, दैट माइट बी एट एनी मूड, दैट माइट बी एट द व्हाइट बोर्ड पर आप लेक्चर देते हैं, दैट माइट बी इन द वर्बल डिस्कशन होती है या पावर प्रेजेंटेशन भी होती है. तो सबसे पहले जो है आप जो है अपनी ऑब्जेक्टिव्स जो है पेश करें. आप ऑब्जेक्टिव्स जरूरी है, इसलिए आज हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव किस तरह बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव के टाइप्स क्या हैं और इसके डिफरेंट लेवल्स क्या हैं और किस तरह जो है हम इसको कंस्ट्रक्ट या डेवलप कर सकते हैं. तो इस हमारे आज वाले लेक्चर में जो ऑब्जेक्टिव ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द पार्टिसिपेंट्स, द ऑडियंस, they will be able to define the learning objectives and discuss the Bloom's taxonomy.
So these objectives, they are very specific and measurable. In terms of, if our objectives are not specific, it means we are unsure that what we are going to teach our students. So actually, these are the characteristics and properties of the good objective, that should be specific, that should be measurable, that should be relevant, that should be time bound, that should be realistic as well. So all these different aspects of the objective, they make it a very effective and good objective. So these are very specific and measurable terms that clearly describe as to what the student would have learned or should be able to have learned at the end of this ongoing learning activities. The statement of what the educational process hopes to achieve. It means goals भी हम इसको कह सकते हैं, but there should be and you all should have very clearly about what is the difference between the goal and objective. Actually goal जो है, this is long term statement होती है. long term जो है आप anticipation करते हैं कि suppose आप जो है इस semester से जब आप निकलेंगे, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, तो आपने कौन कौन सी स्किल्स जो है वो लर्न की होंगी, या इस पूरी ग्रेजुएशन से जो ये आपकी 8 सेमेस्टर या 10 सेमेस्टर है, इससे जब आप ग्रेजुएट होंगे एट द एंड ऑफ दिस कंप्लीट कोर्स, तो आप जो है आप में कौन कौन सी स्किल्स होंगे, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज होंगे. तो एक्चुअली ये गोल्स होते हैं, और यही गोल जो है को हासिल करने के लिए फिर हम शॉर्ट टर्म जो के लिए बना लेते हैं, उसको फिर हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं. तो आप जब एक लेक्चर या 1 आवर 2 आवर का लेक्चर लेते हैं, तो उसमें जो आप एंड में हासिल करने, देयर आर द दो वी कैन सो दैट दे आर द शॉर्ट टर्म गोल्स, लेकिन दो शॉर्ट टर्म गोल्स जो वी कैन से दैट दे आर नोन एज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव. So these are the characteristics of a good objective. The objective should be smart. It should be specific, as we discussed earlier. It should be measurable. It should be attainable, achievable. It should be relevant to the field. It should be the time based. So first of all, going to in the detail of this Bloom taxonomy, you all are familiar with the word taxonomy. That is just the study of the classification of the different elements, the different objects, and the different matters is known as the taxonomy. So we have discussed them in detail. Who was the person behind this Bloom taxonomy? So he is that Benjamin Samuel Bloom, and for the first time, which we can call as the first volume of the Bloom taxonomy, that was in 1956, and this is actually the reference to that article, to that book, which was written by the Blooms and along with other colleagues as well. एक बात जो है मैं आपको नोट कर ले, आपकी इस जितना भी ये ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है या ये कंसेप्ट बना हुआ था, सो दैट वाज ए ग्रुप डिस्कशन थी, एक टीम वर्क था, लेकिन उस टीम को लीड कर रहा था दैट्स बेंजामिन ब्लूम, एंड दैट्स व्हाई in honor of that leader of that team, the concept that was named as the Bloom taxonomy. जैसे हमने पहले कहा था, कुरिकुलम जब हम डिस्कस कर रहे थे कोर्स आउटलाइन, तो वहाँ पर भी हमने ये तीन डोमेन्स डिस्कस की कि there will be 3 domains of learning, that is cognitive, which we can call as the what we know about something, what we have in our mind, what we have in our vocabulary. So that is actually the cognitive skill. Psychomotor skill simply means activities in which we use our skeletal muscle, in which we are doing some work, in which we are having some physical activity that we can call as the psychomotor. And then the surrounding and parallel going reactions, feelings, emotions to the cognitive and psychomotor domain, they can be called as the affective domain. So first of all, we will discuss the cognitive domain and the subdomain of this cognitive domain of the Bloom, and then later on we will just go towards the
psychomotor domain, and then towards the affective domain. So actually, the Bloom taxonomy or the cognitive domain, when it was proposed in 1956, so it was divided into these 6 subdomains. That is the recall, comprehension, application, analysis, synthesis, and then evaluation. अगर हम इसमें देखें तो it's just look like stair. इसका मतलब ये है कि actually these are the different level of learning, and when a student is just enrolled in a course, for example, he is enrolled in the BS nursing, so उसकी पहले step जो है यहाँ पर होगी. This is the most simple learning level. We can say that this is the very easy level of learning. और जैसी जैसी ही एक एक स्टेप ऊपर जा रहा है, so the level of learning जो है ये difficult से difficult होती जाती है, and then at the end, which is the evaluation, that is the toughest, that is the most difficult level, and the last level, when the students, they just become expert at that subject, they become master at that, even it means they have been graduated from that subject. So recall simple means remember a memorization of the previous existing knowledge about something. Suppose you are discussing them the structure of cell, and they have already studied these different types of cell, the plant cell and the animal cell. They are familiar with the word cell. So आप उनसे just एक question करते हैं कि what you know about the cell, where what are the different types of cell. तो ये जो पिछले उनका है, आप उनसे अगर ये क्वेश्चन करते हैं और ये आप के कुछ ऑब्जेक्टिव बना लें, so that will be the recall. Recall simple mean जो previous knowledge existing knowledge है उसको आप provoke करते, उसको आप activate करते हैं. This is the comprehension. Comprehension mean कि जो उनकी recall, उनकी definition है, उनकी कुछ knowledge है, उसको आप उनसे कहें कि इसको थोड़ा सा explain करें, इसको elaborate करें, इसको आप थोड़ा सा open करें कि इसकी meaning जो है आप बता दें कि what does it mean. और फिर जो है इसी explanation, इसी elaboration को जो है आप एक apply करें into the new conditions, कि आप जो इसकी learning के या वही जो उनकी प्रीवियस रिकॉल और उसकी प्रीवियस कंप्रहेंशन को आज वाले टॉपिक के साथ कि जो आप ह्यूमन सेल है उसके ऑर्गेनेलिज्म पर बात करेंगे, उस पर आप उसके अप्लाई करें. फिर उसके बाद आप एक और डिफिकल्ट लेवल पर चले जाए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ न्यूरॉन व्हिच इज अ नर्व सेल एंड अ मसल सेल. So this is just your analysis mean कि उनकी थोड़ी सी आप डिफिकल्टी बढ़ जाती है. So that is analysis, we understand both the content and the structure of the material. उसके बाद जो है again then the different muscles जो होते हैं ना, cardiac cells होती हैं, cardiac muscle होती हैं, smooth muscle होती हैं, and then skeletal muscle, उसमें थोड़ा सा और जो है आप डिफिकल्टी एंड डिटेल डालते हैं. So it mean कि जैसे जैसे जो है आपकी डिटेल बढ़ती हैं, जिसकी आप आगे बढ़ते हैं उस टॉपिक में, आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होते जाते हैं. सही. तो जस्ट अगर हम इसमें देखें इस ब्लूम टैक्सोनॉमी से, दीज ऑल आर द नाउन्स, जैसे रिकॉल है, कंप्रहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन. Later on in 2001, these subdomains were again modified. लेकिन चूंकि they all were based on the Bloom taxonomy, so उन्होंने नाम चेंज नहीं किया. Still the Bloom taxonomy is used for these subdomains. लेकिन ये डोमेन जो है थोड़ी सी चेंज हो गए, और वो चेंज क्या थे कि उन्होंने जो है इसको क्या किया कि उसको थोड़ा सा वर्ब सूरत में लेके आए कि रिमेम्बरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाइंग है, एनालाइजिंग है, इवैल्यूएटिंग है, क्रिएटिंग है. यहाँ पर एक चीज अगर आप नोट कर ले कि इसमें अगर आप देखिए सिंथेसिस which is actually another word for the creating, for the making, this is the fifth subdomain of the original volume of the cognitive domain, but in the modified, the synthesis or the create, this is the last one. It means students have to evaluate
their self. And when they are going to realize that now are master at that subject, so then they can uh, discuss and detail and more about that subject, that topic. So this is the revised, this is the original classification of the Bloom taxonomy, or we can say that the Bloom cognitive domain taxonomy or the subdomain, and these are the revised classification. Almost the concept is similar, that if we look at the remember, this is just the recognizing and recalling facts. उन्होंने उसमें सिर्फ नाम थोड़ी सी चेंज की हैं, और नाम भी उन्होंने सिर्फ इन दो तीन की चेंज की है, और ये उनकी सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज हो गई। ठीक? अच्छा, इसमें अगर आप देखिए तो अगेन इट मीन दिस इज द बेस, और जैसे आप ऊपर जाएंगे तो अगर आप किसी स्टूडेंट्स की ये बेस जो है ये अगर स्ट्रांग नहीं है, तो ऑब्वियसली टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो है ये भी स्ट्रांग नहीं होगी। इसलिए हर एक लेवल जो है जब तक ये उसमें मास्टरी उसमें नहीं आती, जब तक स्टूडेंट उसमें एक्सपर्ट, वी कैन से एक्सपर्ट यूज वर्ड कर सकते हैं, उसमें नहीं हो जाते तो हम उधर नहीं जा सकती, यानी हायर लेवल पर नहीं जा सकती। दैट्स वाई अगर स्टूडेंट्स को आप इजी क्वेश्चन करें, रिकॉल करें, एंड दे डोंट नो अबाउट द डिफरेंट फंक्शन ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, तो देन आप जो है उसको कहेंगे नर्व सेल है, मसल सेल है, तो बेसिकली यू हैव टू अगेन come to the start and again start from the zero। तो ये है कि जब तक आप उसकी बेसिक जो है वो सही तरीके से बिल्डअप नहीं करोगे, तो आगे जब वो क्लिनिकल साइड पे जाएंगे, जब वो उनकी थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन सेमेस्टर्स होंगे, इसमें वो क्लिनिकल साइंसेस की तरफ जाएंगे, तो फिर उनमें थोड़ी सी मुश्किलात होगी। सो इफ दे हैव स्टडीड वेल एंड इफ दे आर बेसिक, दे आर स्ट्रांग, so obviously they can do better in the upcoming years and upcoming steps। So then the understanding just understanding what the fact mean, यानी जो definition उन्होंने की है, जो रिकॉल उनकी है, जो नॉलेज उनके जहन में, क्या उनको पता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये जस्ट एक रट्टा लगाया हुआ है, या इसकी कुछ मीनिंग मुझे पता भी है कि कैन आई एलैबोरेट, कैन आई एक्सप्लेन व्हाट आई एम सेइंग। सो दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग। प्रीवियस में अंडरस्टैंड की जगह कंप्रहेंशन था, एंड रिमेंबर की जगह दैट वाज द रिकॉल। फिर ये जो अंडरस्टैंडिंग मेरी है, या जो एलैबोरेशन मेरी है, जो उसको मैं किस तरह जो है डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर इफ वी नोटिस दिस इज जस्ट वर्ब, recognizing, understanding, applying, breaking down, and then judging, and then combining to make a new concept, a new idea। तो सिंपल एनालाइजिंग, एनालाइज में ये होता है कि कौन सा लेवल है जिसमें आप किसी भी आइडिया को, किसी भी कंसेप्ट को आप जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक करके आप उनको दे देते हैं, एंड देन दे हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड सिंगल कंपोनेंट ऑफ दैट होल सब्जेक्ट, और फिर उसमें इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट में क्या मतलब है कि ये फिर उसकी अपनी जजमेंट करेंगे कि जो अंडरस्टैंडिंग है ईच कंपोनेंट, इसकी क्या हम है उस पे, क्या उसकी जजमेंट जब पूरी हो जाती है, एंड व्हेन दे आर एक्सपर्ट टू द सिंगल कंपोनेंट ऑफ दैट आइडिया, तो फिर आप उन सारे कंपोनेंट्स को दोबारा कंबाइन करके और इससे एक न्यू जो है होल बना लेते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। व्हेन you are teaching to the students of first and second year, or the first and second, third and fourth semester, so basically they are in the remember, understanding and applying in three levels में होते हैं। या we can say that कि जो आप basic पढ़ाते हैं anatomy, physiology, biochemistry, so mostly they are in these two level, the remember and understanding, and that's why these both can be combined called as the C1 objective। Then they apply, analyze. These two are known as the C2, and then they evaluate and they create. They are the difficult one, that is known as the C3. So we can also call as the remembering is known as the C1, the understanding is known as the C2, applying is the C3, analyzing is the C4, evaluating is the C5, and the creating is the C6.
So these are if there is a task, and at the end of this lecture you will be able to identify that this is C1, this is C2, this is C3, या ये task जो है this is कौन सा लेवल है, ये C5 है या C6 है या C1 है या C2 है। तो एक तो आपको ये याद होनी चाहिए कि सीक्वेंस क्या है, यानी पहले आपने किसी चीज को मेमोराइज करना है, फिर रट्टा लगाना है, इसको फिर समझना भी है, और समझने को फिर हम किसी और डिफिनेशन, जैसे व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल, cardiac muscle, skeletal muscle, and that what is the basic, why they are different types, what is the difference between them. So this is understanding, and then what is the function of the cardiac muscle. So this is then, and if there is damage to the cardiac muscle, so what happens. So ये जो what happen का आंसर होगा तो फिर ये एप्लीकेशन होगा, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग आ गई है। अब अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी द एप्लीकेशन। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस सीक्वेंस जो है याद होनी चाहिए व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर ऑब्जेक्टिव, अगेन कि रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, एंड देन creating. So basically this is just the comparison of the old and new version. Nothing have changed, just अगर हम यहाँ पर देखें, so the synthesis, which is actually the top of the new version creating, that was the second last evaluation. Let's just come to the second last in the new version. Another difference जो इनकी आई है, that is just the transferring of the subdomains from the noun towards the verb form. जैसे यहाँ पर knowledge है, recall है, so this is just remembering. Comprehension is then transferred to the understanding. Implication is just replying. Analysis is the analyzing. Synthesis is the evaluating or evaluate, and then the synthesis is the creating, and evaluation into the evaluating. Yeah, evaluate, which is actually a verb. So remember, understand, apply, analyze, evaluate. These all are the verb form, while the old version, which was proposed in 1956, these all are the noun. So that is one of the difference. This is actually the reference to this modified, or we can say that the new version of the Bloom taxonomy, and this is actually we pehले भी हम slide में मौजूद था, that is the reference to the old version of the Bloom cognitive domain. अच्छा, सो अब थोड़ी सी हम डिटेल से जाएंगे कि किस तरह हमें पता चलेगा कि कोई भी टास्क जो है ये कौन से लेवल का है, सही। तो उसमें याद रखिए कि हर एक लेवल जो है, जितनी भी लेवल्स है, ये इजी से है, फिर ये जितने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हम लास्ट C6 तक पहुंच जाते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्टिव दे शुड स्टार्ट फ्रॉम एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब जो है ये डिफाइन करेगी कि ये कौन से लेवल है या कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव सब डोमेन है, C1, C2, C3, C4 है। So remembering में ये है कि this is the most basic, the most easy, the start of the learning, requiring the least amount of cognitive rigor. This is about students recalling key information, for example, the meaning of a word or simply the definition of a term. Different verbs that can be used to ask a question regarding the C1, like the arrange, define, describe, list, match, name, order, recall, reproduce, and etc. An example of this activity, which of the first level, remembering, that is name 3 common varieties of apple. Suppose you are talking about on the discussing a lecture on the nutritional effects and the nutritional benefits of apple, the health benefits of apple. उस लेक्चर में आपका C1 क्या होने चाहिए इनिशियली व्हेन यू आर जस्ट, और इससे क्या हो जाएगी, इस तरह की जो C1 टाइप की क्वेश्चन या टास्क जो है, ये स्टूडेंट्स के अटेंशन भी आपकी लेक्चर में बढ़ाएगी, और एक इंट्रोडक्शन भी मिलेगा। आपके लेक्चर है दैट इज द हेल्थ बेनिफिट ऑफ द एप्पल या द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ द एप्पल, और आपका C1 क्या हो सकते हैं कि आप सिंपल नेम बता दें। इट्स मोर इजी, आप प्रीवियस voluntarily any person who will name that what are the 3 different varieties of the apple. And as we all know that there are more than 50 and 60 varieties. So उसमें से कुछ जो है ये हैं, जैसे for example this is the pink lady,
then the bromley, the red delicious, the golden delicious, the cox apple, then the Bourbon and the Granny Smith and the Royal Gala. So these are the different. अब students को आप ये नहीं कह रहे हैं कि which one is the most delicious, which one is the more common apple, the most commonly producing apple in the world, what is the most rare apple which is very delicious, yeah, which is very rare and very less commonly present in this world. ये फिर बाद में आप उनसे पूछ सकते हैं, just they have to name this. Then the understanding में ये है कि जो definition उन्होंने किए हैं, जो उनकी जो मेमोराइजेशन थी, जो उन्होंने अभी रिकॉल किया है, जो उनकी पिछली जो नॉलेज था, वो उसको थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करेंगे, एलाबोरेट करेंगे उसको थोड़ा सा जो है, और फिर यू कैन से दैट कि वो डिटेल में जो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करे, कंसाइज करे, if they are understanding what they have said, they can easily summarize all these points. So in the level 2, it is to do with the students demonstrating an understanding of the facts which they are remembered. At this level, the students who recalls the definition of a word, for example, would also be able to show understanding of the word by using it in the context of the different sentences. Examples of the action verb which can be used for the constructing this level 2, that would be the classify, discuss, explain, identify, report, summarize. Suppose जिस स्टूडेंट ने नाम आपका पहला जो था कि नेम एनी 3 कॉमन वेराइटीज ऑफ एप्पल, एंड दे जस्ट उन्होंने कहा कि भाई पिंक लेडी है, ब्राह्मणी है एंड कॉक्स है. आप यहाँ पर उसे आपके सामने जो है उनको फिर एक पिक्चर्स ले रहे हैं कि भाई विच टाइप ऑफ एप्पल इट इज. If they are understanding what they have said, that they are the pink lady and the red delicious, that two different varieties, so they will clearly understand, yes, this one is the pink lady and this one is the Bourbon and this is the Gala apple. If they just memorize that these are 3 names and they are not able to identify which apple is that, so फिर ये होगा कि you have to discuss in that level. To summarize the identifying characteristic of a golden delicious apple and a Granny Smith apple. So that is just the comparison between the two apples. That suppose आप जो है इनसे कि इनकी हेल्थ बेनिफिट्स इनमें ज़्यादा है. And now this is थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है. पहला वो सिर्फ नेमिंग था, अभी थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है. फिर इसमें जैसे आपने कहा कि ये डिफरेंट डायग्राम्स दे, तो इसमें से if they are really understanding what they have said, the pink lady is a type of apple, and they are understand what they have said, so they will easily identify that which apple among these is the pink lady. Then that is the applying, which is another more difficult level. This is the applying. This level, it is concerned that with how students can check their knowledge, understanding, applying it to different situations. This usually involves students answering questions or solving problems using their remembering, using their pre-existing knowledge and the understanding of that knowledge to solve some other problem. Examples of the action verb which can be used for the level 3, or we can say the C3, they are the apply, calculate, prevent, demonstrate, interpret, show, solve, suggest and etc. अच्छा, ये वर्ब जो है थोड़ी सी आपको इंटरनेट पे अगर आप जाएं तो एक्शन वर्ब आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी. तो इसमें ये होता है कि कुछ जो है ऐसे ही ओवरलैप करते हैं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन की नुयत क्या है, कि वो क्या देख रहे हैं, कि इसमें क्वेश्चन की डिफिकल्टी को देखते हुए यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट विच लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज इन दिस क्वेश्चन. तो थोड़ा सा पहला क्वेश्चन हम उस एप्पल को न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ द एप्पल वाला लेक्चर था, उसमें से सिंपल क्वेश्चन जो हमने कहा कि कोई भी 3 एप्पल के नाम बताएं. फिर हमने उससे कहा कि विच वन इज द पिंक लेडी, और 2 के हमने गोल्डन डिलीशियस और जो ग्रैनी स्मिथ, तो उसके दरमियान हमने डिफरेंस क्या है, उनमें से कौन सा जो है हेल्दी है, कौन सा जो है ये डिलीशियस है, कौन सा जो है ये
किस मौसम में ज्यादा पाया जाता है, किसकी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ये डिफरेंट उसकी कंपैरिजन थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और भी जो है डिफिकल्ट बना लेते हैं कि would pink lady apples that prevent discovery a disease caused by the deficiency of in vitamin C। अब थोड़ा सा हम इसकी और भी डिफिकल्टी की तरफ लेके जाएंगे। अब एप्लीकेशन हमने देखा कि यहाँ पर वो कह रहे थे कि दिस इज हाँ इसकी जो पिंक लेडी है दिस इज द सबसे डिलीशियस है और ये रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन है। अब उनको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि यस दिस इज द पिंक लेडी, इसके हेल्थ बेनिफिट्स ये हैं, इसमें विटामिन ज्यादा हैं, इसमें मिनरल्स ये हैं, इसमें ये आयरन है और ये ब्ला ब्ला। अब उनसे आप क्वेश्चन क्या है, इसी अंडरस्टैंडिंग को आप अप्लाई करें इन अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, जरूरी है कि विच इज द डेफिशिएंसी ऑफ vitamin C. If they already known to the fact that yes, this apple is rich in vitamin C, so they will clearly yes, the apple, this pink lady has a role in the preventing or treating this disease. The C4, which is the analyzing, again, it is the about the students being able to draw a connection between the ideas, thinking critically to break down information into the sum of its part. यहाँ पर जो बात आ जाती है कि इसमें ब्रेक डाउन आ जाती है, इसमें कंपोनेंट को अलग अलग किया जाता है और फिर इसमें हर एक कंपोनेंट को थोड़ा सा डिटेल के साथ फिर एक्सप्लेन एंड स्टडी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एनालाइज, अप्रेस, कंपेयर, कंट्रास्ट, डिस्टिंग्विश, एक्सप्लोर, इन्फर, इन्वेस्टिगेट। थोड़ा सा अगर हम इन वर्ड्स को देखें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क की तरफ उसके इन डेप्थ जो है आप स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे। उसी एग्जांपल को अगर हम थोड़ा सा इस लेवल पर C4 पर लेके आए विच वाज द हेल्थ बेनिफिट्स आर द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ द एप्पल, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अब यहाँ पर दो वर्ड्स आ रहे हैं कि कंपेयर भी करना है और फिर इसको कंट्रास्ट भी करना है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट four ways of the serving food made with apples and examine which one have the highest health benefits. अब इनमें से स्टूडेंट्स की अपनी मर्जी की इनमें से चार डिफरेंट सोर्सेज जो हैं या तरीके जो हैं इससे ढूंढ निकाले कि जिसमें एप्पल जो है उसको सर्व किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट मे बी विद some honey, it may be with chocolate, it may be some with dry fruits and many more। और इनमें फिर इनकी कंपैरिजन करें और फिर इनके कंट्रास्ट इनमें डिफरेंस क्या है ये भी करें। तो ये हमारा जो है एक्चुअली थोड़ा सा हायर लेवल हो जाएगा विच विल बी आवर C4 लेवल। अब हमारा नेक्स्ट लेवल जो है C5 विच इज एक्चुअली द इवैल्यूएटिंग। ये तब होता है कि जब स्टूडेंट्स अपनी खुद असेसमेंट करते हैं, अपनी खुद जजमेंट करते हैं, जो उन्होंने सीखा है, जो उनको पहले से पता था, उनको यूज करके उनको पहले समझने के बाद उनको यूज करके न्यू आइडियाज बनाते हैं। फिर उनको इस तरह जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके उसको और भी डिटेल से पढ़ते हैं। देन दे आर गोइंग टू जज योरसेल्फ, एक फीडबैक इनको दे देते हैं और खुद को जो है वो असेस करते हैं। सो दिस लेवल व्हिच इज एक्चुअली द इवैल्यूएशन, इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ, it is reached when students can make accurate assessment or judgment about different concepts. Students can make inferences, find effective solutions to problems, and justify conclusions while drawing on their knowledge and understanding, which is actually the lower level of learning, the easy level of the cognitive domain. Different words, action verbs that can be used for the such objectives that may be the argue, the assess, critique, defend, evaluate, judge, justify, and many more. For example, if we make an objective or questions with the level 5, then the question would be like which kind of apple are best for the baking
a pie, and why? Actually, pie जो है, this is a dessert which may be made from the different fruits and sweets. And the most commonly used among them is the apple pie. So these are the different ways of the baking pie and which apples that are best for the use. As अब स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि भाई डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एप्पल क्या हैं, फिर उनमें जो है they can identify and they can understand what they have listed. उसके बाद जो है they can actually differentiate and compare and contrast different varieties. और यहाँ पर फिर वो क्या कर देते हैं एक्चुअली फिर उसी अंडरस्टैंडिंग, उसी एप्लीकेशन, उसी कंपैरिजन, उसी कंट्रास्ट को यूज करके they can tell that which kind of apple they are best for the baking apple pie and why, what is the reason. Now that one is the most difficult. That is where the creation occurred. जहाँ पे students they can solve problems on the basis of the previous knowledge and the basis of previous experience, though the problem will be new for them. But if they have some relevancy to the previous problem, so they can bring solution to this from their self. So it is the ultimate aim of the student's learning journey at this level. A Bloom taxonomy are the cognitive domains. Students they demonstrate what they have learned by creating something new, either tangible or conceptual. Tangible which means something physical, which we can touch, we can palpate, and conceptual means just a theory like. This might include, for example, writing a report, creating a new recipe, revising a process to improve its results, or formulating a new treatment protocol. And different action work can be used for the constructing such high level and difficult objectives that the words may be the compose, convert, construct, create, devise, generate, organize, plan, produce, and etc. Now, tasks which may be considered as the C6 are the creating level, which is the high level, the toughest and the highest level of the cognitive domain, the most difficult level of the cognitive domain, that will be convert a recipe to a new recipe by replacing your choice of ingredients, argue for the health benefits of the using the ingredients you choose versus the original one. Now, they will utilize all the components which they have learned in the previous 5 different levels, and then they will use them to make a new recipe. They will convert the previous one, which after evaluation, they just came to know that that is one of the best recipe. And now they will bring some changes. They will uh, bring some changes in that one. I will make another, which we can't. That's why it's called as the creating. If we look at overall to the Bloom taxonomy, that is, as we discussed earlier, that is the students they are going from the easy task to the difficult. We can say that the level of learning जो है ये change हो जाती है from the easy level to the difficult level. और जब तक एक student जो है जो नीचे लेवल उस पर उसकी मास्टरी नहीं हो जाती, जब तक उस पर एक्सपर्ट नहीं हो जाता, जब तक उसमें उसको एक महारत हासिल नहीं होती, तो आप ऊपर नहीं जा सकते। और जाएंगे भी तो एक्चुअली बेस कमजोर होगा, obviously the top of the building will be also weak. So first master those lower down and then जो है आप ऊपर जाएं. That's why ब्लूम ने जो है इस कंसेप्ट को कहा कि this is actually the mastery learning. It means you have to be master in one subdomain, and then when you are going to upper level, you should be master of the lower domain. This is known as the mastery learning. Moving up the taxonomy, as we know that जितना हम ऊपर जा रहे हैं डिफिकल्टी जो है बढ़ती है, जितना हम ऊपर जा रहे हैं, and depth of the topic
जो है इंक्रीज होती है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन एंड एलेबोरेशन जो है ये और भी ओपन हो जाती हैं. तो स्टूडेंट्स बिकम मोर नॉलेजेबल, दे बिकम मोर स्किल, they become experts. And even at the start when they were just know just the definition or the understanding of the definition, now at the higher level they can solve the problem with the help of their previous knowledge. To develop an improved understanding of the content they are learning with these objectives. Lesson objectives, question and activities, and action verb are the best for the constructing of these objectives. So that will be enough for today. In the next lecture, inshallah, we will discuss some questions and then some sample activities of all these 6 subdomains, including this level 1 remembering example, and then a number of questions, and later on we will move to the other topic. In the next lecture, inshallah, we will also talk about the other domain as well, which is the psychomotor domain and the affective domain. If we summarize this lecture, so initially we discussed about the old version of the Bloom taxonomy. There are 6 domains. In the new version, the number of subdomains that doesn't change. They are just the same. There were 6 and there are 6. The change is just there is change from the noun to the verb, and another change in it is just the exchange of the second last and the last in the old and the new. Then we discuss some action verbs and then explain the different levels of the learning, the different level of this cognitive domain, the different subdomain of this through an example, and that was the today lecture. Thank you so much to all of you.